जो बहुत ही दूर से हमसे बात कर रहे हैं, ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क, संतोष राव मैनहट्टन वेंचर्स के इंडियन ओरिजिन के हैं, न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं और मैनहट्टन वेंचर्स के हेड ऑफ रिसर्च और पार्टनर हैं और हमसे बात करने के लिए काफ़ी देर तक जगे भी हुए हैं। संतोष, गुड इवनिंग देयर इन न्यूयॉर्क। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पेशेंटली वेट करने के लिए, इस कॉन्वर्सेशन के लिए। ये जो ग्लोबल फैक्टर्स इस समय इमर्ज हो रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स को नर्वस कर रहे हैं, आप कैसे एनालाइज करते हैं इनको? I think right now देखिए एक तरह का कंफ्यूजन है हर जगह। यहाँ पे यूएस में inflation is raging, Federal Reserve, we don't know whether how many interest rates are going to come, how high they're going to go, and then we have this producer index was up, consumer sentiment is down. And then we had the Goldman Sachs report today that said that operating expenses are up. So all the indicators suggest कि थोड़ा प्रॉब्लम है आगे जाके, तो फेडरल रिजर्व विल रेज द रेट्स। कितना बढ़ाएंगे वो पता नहीं, but that has an impact on the global market. It has an impact on the dollar, which impacts emerging markets. Then you have this oil crisis. We don't know where this the UAE, Saudi, Yemen thing will go on. That might have a effect on the oil prices. So all that has an impact. So there's a combination of events driving this whole thing, and that will impact the emerging markets definitely. संतोष सर, ये कितना आगे और चल सकता है? वैसे कुछ अपना आपका एनालिसिस है क्या ये डॉलर इंडेक्स की जो प्रॉब्लम है और क्रूड का जो राइज है? क्योंकि कुछ ना रिपोर्ट्स ये कहती है कि मे बी 95 हो जाएगा, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि 105 हो जाएगा। अब इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए क्या है ना, उसका 80% एनर्जी का बास्केट इसी क्रूड इंपोर्ट से पूरा होता है, तो उसका बिल बहुत बन जाता है। जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए इस पे। Sure. At this point, consensus to hai about close to 85, 90. I think that's pretty much given. 100 pata nahi abhi. I think it depends a lot on the global events. On one hand, वो देखना और वायरस भी है अभी तो, ओमिक्रॉन देखना कितना बुरा हो जाएगा वो। Agar everything slows down, travel slows down, everything, that has an impact on oil prices. So there's still combination of events, काफी cross currents hai oil prices ke liye. So at this point, I think the consensus is that it's going to go up closer to 90, probably slightly more, but 100 bhi hai some estimates, but mere hisab se, following the economists and following the markets, I think it's closer to 90 at this point, because it's still not a given कि एकदम ही सब बढ़ेगा। अभी काफी issues हैं अभी global markets में जो settle होना चाहिए अभी। राइट, मॉर्निंग संतोष, प्रियंका यार, एक और आपसे व्यू पॉइंट समझना चाहेंगे कि ग्लोबल एसेट क्लास को इस वक्त किस तरह से देना चाहिए, क्या किस तरह की पोजीशनिंग और एडजस्टमेंट चल रही है? क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड यहाँ से 2% तक की बात भी की जा रही है और जाहिर तौर पर इंटरेस्ट रेट बनने हैं, ये तो तय है, लेकिन शायद हो सकता है मच मोर देन एंटिसिपेटेड, इस तरह की भी बात की जा रही है कि समय से पहले शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं। तो ऐसे में ग्लोबल एसेट्स के बीच में जो ये पोजीशनिंग है, जो एडजस्टमेंट है, वो आप कैसे देख रहे हैं? एफआईज का पैसा कहाँ जा सकता है? कौन इमर्जिंग मार्केट्स में किस तरह की पोजीशनिंग अभी भी इंडिया की लगती है? एफआईज का लगातार हम देख रहे हैं दिसंबर में सेल ऑफ करते रहे, अब भी उनका एक भरोसा वापस नहीं लौट रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? I think interest rates का भी अभी uncertainty है अभी। देखना अभी bond yields तो बढ़ रहे हैं, but they haven't touched 2% yet. The 2-year rate is just coming up, it's just 1%. तो 2 years इतने बड़े नहीं अभी. So I think there is still uncertainty market में कि inflation शायद 7% से ज़्यादा नहीं होगा. I mean, last month was 7%. शायद 5% होगा. I think the consensus is moving closer and closer कि by the end of the year, the inflation may not be that bad. So the Fed may not be that aggressive in raising rates. So I think that has an impact on the dollar, on everything else. So I think at this point, the biggest thing is कि we need to wait and see. Yes, they're going to go up. But kitne, how aggressively, we don't know yet. I don't think it's a given.
दो रेट तो डेफिनेटली है, पर 3 या 4, आई डोंट नो, गोल्डमैन इज सेइंग 4, मॉर्गन स्टैनली इज सेइंग 4, सो आई थिंक अलग अलग है based on number of factors, but I think two is for sure, and that's okay. The market can take up to 2% yield also, so I think that's not a problem. It'll adjust. I think एक तरह का shock हुआ है, which is surprising because the Fed had said already that we are going to raise rates, but inflation इतना high होगा ये पता नहीं था. 7% was a high reading last time. The feeling is कि और बढ़ेगा. अगर नहीं बढ़ा तो शायद वो Fed इतना aggressive नहीं होगा, and that will be good for everybody, emerging markets and US also. So I think we will be back to more kind of steady growth at that point, but rather than this very volatile market. संतोष, इंडियन मार्केट्स पे आपका क्या व्यू है 12 to 18 मंथ्स? कौन से थीम्स आपको अच्छे लगते हैं इस समय? वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, आपका क्या व्यू है? कैसे पोजिशन होंगे आप अगर इमर्जिंग मार्केट में आपको इंडिया चूज करना हो तो? Sure, I think it's a global positioning. There is a little bit of barbell approach. Tech is not dead, growth is not dead, but high tech that has earning potential, pricing power will continue on that end, but the rotation to value is definitely there because there is a lot of rebuilding to go on, a lot of coming back to work stuff going on. So you can see materials, then you have a lot of energy, you have financials, and all these are value stocks that are and infrastructure stocks as well, with especially if Biden's already passed the infrastructure bill. So in the US, you have rotation to value and very high quality tech stocks. And same thing in the emerging markets as well, because they're pretty much the same thing. India may be wahi hoga. I think there'll be a rotation more into value because they've been beaten down quite a bit. And overall, there is a consensus that the emerging markets are much more attractive than US markets. So you will see that the emerging markets will do much better in terms of flow into those countries because they were beaten down much more than US. राइट, बिल्कुल। ऐसे में जाहिर तौर पर इमर्जिंग मार्केट से एक फेवरेबल सिचुएशन लगती है। आपका क्या मानना है कि इस साल अगर एक फिगर आपने शेयर करनी हो तो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया में इस साल कितना इंडेक्स रिटर्न दे सकता है? एक जस्ट एंटिसिपेटरी फिगर। या वो मुश्किल है। आई डोंट फॉलो इंडियन मार्केट ऑन अ डे टू डे बेसिस। आई थिंक द ओवरऑल कंसेंसस इज दैट द बैक हाफ ऑफ द ईयर will be much better. Things will come back to normal. The expectations are not, it won't be that bad in terms of inflation and interest rates. The Fed will not be very aggressive because they cannot afford to raise rates very aggressively, though they need to. They need to cut down on inflation, put a lid on that. But there will be a limit to how much because it has consequences worldwide. So there is a growing consensus that Fed will be more considerate. They will keep even though they don't have to worry about the rest of the world, they will have to ultimately, and they will. So I think it will be more moderate. मेरा ख्याल है कि Indian market भी towards the second half of the year, by the end of the year, will be up. कितना बढ़ेगा नहीं मालूम. शायद 5 or 10%, that's tough to say there, but in US there is a growing consensus that it will be up 20% by the end of the year. All right, ठीक है, बिल्कुल। Thanks so much संतोष for giving us your time today और अपनी ओपिनियन हमसे शेयर करने के लिए 18 आवर्स स्वदेश पर अपनी राय शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक ग्लोबल वॉइस आप सुन रहे थे जो ग्लोबल पोजिशनिंग और किस तरह